19th lecture हमने किया क्या था कि we started with this general plane motion and as we are discussing the kinematics of this motion, so we need to perform the velocity analysis of a rigid body mechanism undergoing general plane motion. So as we have discussed earlier, there are two methods of performing the velocity analysis. The first one is the relative velocity method using the relative velocity equation, which we are going to continue. The second one is the instantaneous center method. Probably इस week तो time नहीं मिलेगा, next week अगर time मिलता है तो we are going to go through this instantaneous center method as well. However, after completing this relative velocity method, we will directly move on to the acceleration analysis, and we are going to complete the acceleration analysis first, and then if the time permits, उसके बाद हम instantaneous center method भी जो है वो देख लेंगे. Okay, now what is this relative velocity method? In order to understand this relative velocity method, we considered a rigid body whose position at time t is shown to you by this green line, and at time t plus delta t, let us suppose that its points A and point B have undergone different displacements. So after time t plus delta t, this rigid body is say in this position such that this is point A and this is point B. That is, both the points A and B have undergone different displacements. So in order to perform the analysis of this rigid body, we are going to divide this general plane motion into its components of translation as well as rotation. That is, we are going to consider that first of all, this whole rigid body is going to be translated by this much of amount, and then this whole rigid body is rotated by this much of theta about its base point A. So for this rigid body, we wrote the relative velocity equation taking point A as our base point. So we wrote VB, which is the absolute velocity of B, should be equal to VA, which is the absolute velocity of A, plus VBA, which is the relative velocity of B with respect to A. Now, in this equation, this BA basically represents the translational aspects of motion, how much this rigid body is being translated from time t to time t plus delta t, whereas this VBA represents the rotational aspects of this rigid body. Now, since this point B is in pure rotation with respect to point A, so we have replaced this VBA by the term omega cross r, which is the relationship for velocity vector for pure rotational case. So we have written it as omega cross R. So the overall equation would become VA plus omega AB cross R BA. So this is the relative velocity equation which we would be using, or which we would be applying on any rigid body undergoing general plane motion to perform the velocity analysis. I hope that all of you remember this equation. याद है पिछला टॉपिक आपकी सर वो स्क्रीन? यस सर. स्क्रीन पे पहली स्लाइड ही आ रही होगी. आई होप कि स्क्रीन विजिबल है हर एक को. यस सर, पहली स्लाइड है सर, आगे नहीं मूव कर रही. मूव हुई है आगे? यस सर, उसी का. यस सर, आगे हुई है. चलें ठीक है. तो बेसिकली मैं उसी स्लाइड पे समझा रहा था आपको, इसलिए वो आगे मूव नहीं हो रही थी. एनीवेज, इन द लास्ट लेक्चर वी डिड सॉल्व एग्जांपल 16-6. आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एग्जांपल 16-8 एज वेल एज एग्जांपल 16-9 कवर कर लें, और प्रोबेबली वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज अगर हमें टाइम मिला तो हम इस टॉपिक से रेलेवेंट जो है वो कवर करेंगे. Okay, starting with example 16-8, a rigid body mechanism is being shown to you on the right hand side of this slide. First of all, can you identify the total number of rigid bodies which are in motion in this figure? सर, दो बीम्स जॉइंट से जुड़े हुए. Any other thing which you can identify moving? यस सर, कॉलर भी है. सर एक So collar भी है. So overall, if we take a look at this figure, we have three rigid bodies which are in motion. The first one is the collar, which is constrained to move on this guide rod along the vertical axis. Then we have two rigid links. One is rigid link AB, which is being grounded from point A. So AB चूंकि हमने ground किया हुआ है, which type of motion is possible in link AB? Rotational motion. So since one point of link AB is being fixed, that is point A, so this rigid body is in pure rotational motion with respect to point A. What about link CB? सर जनरल मोशन. Since अगर आप इस फिगर को देखें, at one instant this is the position of link CB. At the very next instant, when this collar has moved downward, this is the position of link CB. It means that this rigid link CB has undergone translation as well as rotation, that is general plane motion. Okay, so link CB आपका general plane motion में आ गया. It means that you have overall three rigid links. One is in translation, that is collar C.
one is in rotation, that is link AB, and the third one is in general plane motion, which is link CB. So तीन links हैं, एक translation, एक rotation और एक general plane motion में. Is the motion clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now reading the statement of this example, we have a collar C which is moving downward at a speed of 2 meters per second at the instant shown. We need to determine the angular velocities of the other two links, that is link CB as well as link AB. Okay, so in order to perform the analysis of this collar, हमेशा हम जब भी velocity acceleration analysis करते हैं, तो we are going to start from that link जिसका motion हमें known होता है. So since in this link the motion of collar C is known to us, so we are going to start from collar C. The collar C is constrained to move along the vertical axis downward. So what is going to be this vector VC if we are using the conventional XY coordinate system? So what should be this vector VC? Minus J hat. So it is going to be minus 2j meters per second, where 2 is its magnitude, and since its motion is directed towards the negative y-axis, so if you want to write it in vector form, you are going to include minus j vector, unit vector. So the complete vector would become vc vector equal to minus 2j meters per second. Okay, now moving on to our next link, which is link CB. So in order to perform the analysis of this link CB, since we have discussed earlier that this link is in general plane motion. So once this link is in general plane motion, it means that we are going to apply the relative velocity equation on this link. What should be our base point, C or B? C, sir. Since the motion of point C is known to us, so we are going to make C as our base point. So accordingly, the relative velocity equation would become VB equal to VC plus omega cross R. Both of them are vector quantities. Here omega represents the angular velocity of this link CB, whereas R represents the relative position of B with respect to C. So the overall relative velocity equation would become VC equal to VB equal to VC plus omega CB cross R BC. Okay, now completing these vectors in this equation, since VC is given to us as minus 2j, so VC की जगह मैंने minus 2j put कर लिया. Moving on to omega, can you judge the direction of the angular velocity of link CB? जो दो positions आपको show की गई हैं, वो क्या represent कर रही हैं? This is going to be the direction of omega, isn't it? So it is counterclockwise. So in order to write this vector, you are going to write omega CB in vector form. So counterclockwise को कौन से vector से represent करते हैं? So it is going to be represented by this positive k. So we are going to write omega CB k cross R BC, which is the relative position of B with respect to C. So what is this vector R? Cos 45 minus cos 45 plus sin 45. तो सबसे पहली बात तो ये कि ये लाई करता है कौन से कोऑर्डिनेट में, द फोर्थ कोऑर्डिनेट, सो इट शुड हैव पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y. Yes, sir. ठीक है, अब बताइए 45 डिग्रीज आपने कैसे निकाले हैं? Sir, tangent से tangent y सर पॉइंट टू सेम है. तो y Yes, sir. देखिए Base एक of तरीके ये पहले perpendicular आप, point 2 है. हाँ नहीं देखें, मैं यही समझाने की कोशिश करूँ, ऑल्दो दोनों मेथड सही है, लेकिन एक तरीका क्या है कि पॉइंट टू गिवन है, पहले आप उनसे 45 निकालें, फिर cos 45 sin 45 करके दोबारा उन पॉइंट टू पे वापस आएं, तो अपने कोई 1-1.5 मिनट आप उसमें जाया कर चुके होंगे. डायरेक्टली आप इसको पॉइंट टू की नहीं लिख लेते. ये भी अच्छी बात. So it is going to be 0.2 I minus 0.2 J. So this is going to be the relative position of B with respect to C. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so accordingly, if we expand it, it would be minus 2J plus taking the cross product, और आपको अगर determinant वाला तरीका ज़्यादा easy है तो आप वो use कर लें, मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है. So first term is 0.2 omega CB. What is K cross I? J है. So it is going to be K. The second term is minus sign, चूंकि वो already मौजूद है, minus 0.2 omega CB. What is K cross J? Negative I. Negative I, तो negative negative plus हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, which is minus 2J plus 0.2 omega CBJ plus 0.2 omega CBI. So this would represent
the velocity of point B, which is velocity B. ये point clear है देखो? Yes, sir. Okay, now moving on to our next link, which is link AB. So moving on to link AB, what is the type of motion which this link is undergoing? Rotational motion. Link AB is under rotational motion about point A. So for rotational motion, अगर मैं आपसे कहूँ link AB consider करें and we need to write what is going to be the velocity VB. So क्या हो जाएगा VB rotation के केस में? R omega. वेक्टर फॉर्म में बताएं. The omega cross R. So omega cross R, but now here omega is going to be the angular velocity of this link, which is omega AB, and R is going to be the vector RB, which defines the absolute position of B with respect to A. So this is going to be omega cross R for link AB. As far as the vector form of this omega is concerned, अगर कॉलर नीचे की तरफ आ रहा है तो लिंक ए बी किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा? Right side. So this link AB would be traveling towards the right side. In other words, the angular velocity of this link is going to be in a counterclockwise direction. So omega AB vector can be written as omega AB K. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, what about this vector RB, the absolute position of B with respect to the ground A? What is this vector? 0.2 J. Negative 0.2 J. Yeah, so this vector is being directed towards the negative y-axis. It has a magnitude of 0.2, so you can write it as minus 0.2 J. And again, expanding this determinant, expanding this cross product, it is going to be minus 0.2 omega AB. And what about K cross J? Minus I. तो ये minus minus plus हो जाएगा और आपके पास ये I बच जाएगा. So let me call it as my equation number 2. Now, equation 1 and equation 2 both represents the velocity of point B. एक में हमने with respect to link CB निकाली है और एक में with respect to link AB निकाली है. But since point B is a common point between those two links, connecting जो point है between those two links, so it should have same velocity, absolute velocity, same absolute velocity. It means that equation 1 and equation 2 can be equated, isn't it? Yes, sir. So equation 1 में मैं equation 2 से VB की वैल्यू अगर निकाल के डालूं तो that value would become 0.2 omega AB I. ठीक है? Okay, so now it is a vector equation. So what does this vector equation represent? It represents the individual I and j coefficients on both sides of the equation should be equal to each other. So once you compare the I coefficients on this in this equation, मैं top पे लिख रहा हूँ, अगर हम I coefficients को compare करें, so left side पे I का coefficient क्या है? It is 0.2 omega AB. ठीक है? So the I coefficient is 0.2 omega AB. So 0.2 omega AB जो है वो आपका coefficient आ गया right side पे. What is the I coefficient on the left side of this equation? 0.2 omega CB. 0.2 omega CB. What does this equation represents? Omega AB should be equal to omega CB. ऐसा ही है? CB. Okay, now comparing Yes, the J coefficients on both sides of this equation. So once you compare the J coefficient, what's the J coefficient on the left hand side of this equation? 0. 0. What is the J coefficient on the right hand side? It is minus 2 plus Minus 2 plus 0.2 omega CB. CB. So this is the equation for the J coefficient, 0 equal to minus 2 plus 0.2 omega CB. So these are the two equations which we need to solve it. So moving towards the final solution, ये आपके पास वो दो equations आई थी. I coefficients को compare करके 0.2 omega AB should be equal to 0.2 omega CB और J coefficients को जब आपने compare किया 0 should be equal to minus 2 plus 0.2 omega CB. So from this equation, omega CB comes out to be 10 radians per second. And since this omega comes out to be a positive quantity, it means that your assumed direction of omega was
Correct. Similarly, putting the value of omega in equation number 3 would give you omega AB to be equal to 10 radians per second again. And since again this value comes out to be a positive quantity, it means that at this instant both these links are are moving with a counterclockwise angular velocities of 10 radians per second. Is it clear to all of you? ठीक है, कोई चीज जो आप पूछना चाहें, sir. कोई क्वेरी, कोई? सर ये ओमेगा दोनों की सेम है, ये 45 एंगल की वजह से है। नहीं, वो जरूरी नहीं है। इस टाइम पे दोनों लिंक्स एंगुलरली एक्सेलरेट कर रहे हैं, वैल्यू सेम आई है। उसकी वजह क्या है कि 45 के एंगल और लिंक की लेंथ भी बराबर है, लेकिन इस टाइम पे दोनों लिंक जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, वो हमें वैसे भी नजर आ रहा है कि कॉलर जब नीचे जा रहा होगा तो ए बी ने तो हर हाल में काउंटर क्लॉकवाइज ही जाना है, सी बी भी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज ही जा रहा है। इसके मुकाबले में अगर मैं आपसे सिर्फ इतना चेंज कर देता कि दिस लिंक is moving, caller C is now moving upward. अब caller C अगर upward move कर रहे हैं तो definitely next instant पे जो आपकी position आएगी वो कुछ इस तरह की position होती। It means कि ये वाला link भी इस तरफ जा रहा था, ये वाला link भी इस तरफ जाता है। It means कि दोनों ओमेगा फिर आपके जो है वो clockwise direction में आ जाते। Yes sir. ठीक है। Okay, so moving on to our next example, which is example 16-9. Again, before reading the statement of this problem, let us first try to understand the motion of these links, the possible motion in these links. Okay, first of all, can you identify the number of moving rigid bodies in this case? Sir 3. We have again 3 rigid links which are in motion. First, starting with link AB. Link AB is being grounded from point A. So what type of motion this link AB would be performing? Pure rotation. It would be in pure rotation with respect to point A. So since this link AB is being grounded from point A, it means that it would be performing rotational motion with respect to point A. Okay, moving on to the third link, which is this wheel D. Okay, आपने किया क्या है कि wheel D जो है इसको आपने इसके center point से जो है वो ground कर दिए. So you have grounded this wheel D from its center point. Now what type of motion is possible in this wheel D? Pure rotation. Rotational motion about its center point जहां से आपने इसको ground किए. So आपके पास दो links आ गए AB और wheel D जो कि pure rotational motion में है. Now moving to the third link, which is link BC. ये आपके पास वो link है जो कि इन दोनों links को connect कर रहे हैं, AB को और wheel D को. At this instant आपको ये blue color के साथ इसकी position show की गई. At the next instant, when this link AB is rotating in this direction, ये link जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा जो येलो के साथ शो किया गया है. तो किस तरह का मोशन इसमें हुआ है कनेक्टिंग लिंक में? General plane motion. इसमें जनरल प्लेन मोशन हुआ है which is a combination of rotation as well as translation. So link BC is basically general plane motion. So in order to perform the analysis आपने जो है वो इसको जनरल प्लेन मोशन वाली इक्वेशन, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन जो है वो अप्लाई करनी होगी. तो आई होप कि इन तीनों लिंक्स का मोशन आपको क्लियर है हर एक को. Yes sir. ओके, सो अगर हम इन तीनों एग्जांपल्स जो कि अभी तक हमने देखी हैं, एग्जांपल 16-6, 8 और 9. 16-6 में 3 लिंक्स थे लेकिन 2 ट्रांसलेशन एक जनरल प्लेन मोशन में था. इसके बाद हमने 16-8 कंसीडर की जिसमें आपके पास 3 लिंक्स थे, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन, एक जनरल प्लेन मोशन. जबकि एग्जांपल 16-9 जो है इसमें आपके पास 3 लिंक्स हैं, 2 रोटेशन और एक जनरल प्लेन. तो तीनों जो डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशंस बन सकते थे वो इन तीनों एग्जांपल्स में आपके कवर हो रहे हैं 3 लिंक्स के हवाले से. Okay, now reading the statement of the problem, the link AB shown has a clockwise angular velocity of 30 radians per second. So it is given to you that this link AB is rotating in a clockwise direction at 30 radians per second. So अब चूंकि given है 30 radians per second clockwise, so अब आप assumption पे नहीं जाएंगे और इसको 30k नहीं लिखेंगे, बल्कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे इसको तो इसके करेक्ट डायरेक्शन में -30k के तौर पे जो है वो आप इसको अपनी इक्वेशन में जो है वो लिख रहे होंगे. This 30 radians per second is the angular velocity of link AB at the instant when theta is equal to 60 degrees. We need to determine the angular velocities of the remaining 2 links, that is link BC as well as the wheel D. Okay, so starting again, हम कहाँ से start करते हैं? हम हमेशा उस link से start करते हैं जिस link की हमें data given होता है. So since here the data of link AB is known to us, so we are going to start from link AB, and for this link which is in pure rotation with respect to point A,
what should be VA? It is going to be omega cross R. This is going to be omega cross R, but what should be the omega? It is omega AB cross RB. So what is omega AB? सर ये गिवन है -30k रेडियन पर So सेकंड। जिस तरह अभी हमने बात की थी, we are going to take it as -30k। यहाँ आप अपनी वो assumption पे ना जाएं कि हमेशा ओमेगा को आपने काउंटर क्लॉकवाइज अज्यूम करना है। हाँ, assumption की हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एक वैल्यू गिवन है, so try to use it in its correct sense. So this omega is going to be -30k. What about RB, the position of B with respect to ground A? सर 0.2 और थीटा 60 डिग्री से, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स निकाल। और दोनों पॉजिटिव होंगे। यस सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0.2 cos 60i, 0.2 sin 60j। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर R आ जाएगा, RB। So once you take the cross product, the velocity of point B, which is BB, comes out to be, cross product लेने के बाद it is going to be 5.196i minus 3j meters per second. So this is going to be the velocity of point B with respect to, अगर हम link AB जो है वो consider कर रहे हैं। Okay, moving forward, what should be the next link जिससे हम अपनी analysis को जो है वो move करेंगे? It is the link which is in general plane motion. So what should be our base point? किसको base point बनाएंगे, B को या C को? B को। क्योंकि हमें B का motion known हो गया, so we are going to make B as our base point. So the equation, relative velocity equation, would become VC equal to VB plus omega cross R, where omega is going to be the angular velocity of this link and R is going to be the relative position of C with respect to B. So this is going to be the relative velocity equation being applied on link BC, which is in general plane motion, taking B as our base point. Why we have made B as our base point? Because the motion of point B is known to us. So that's why we have made B as our base point. Okay, in the previous step, we have already found this VB value to be equal to 5.196i minus 3j plus omega cross R. Can you identify what is going to be the direction of this omega BC? अगला इंस्टेंट आपको शो किया गया है, so ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा होगा कौन सा? So it is again counter clockwise. Again यहाँ अगर आपको समझ नहीं आता तो आप assume कर सकते हैं as BC to be in a counter clockwise direction, but since the mechanism is simple, so instead of assumption we can judge the direction of omega BC. So it is going to be omega BCK cross RCB. What is this vector RCB? 0.2 I. ठीक है? So it is going to be 0.2i. So expanding that cross product 5.196i minus 3j, और अगर हम उसी तरह smaller triangle की बात करें, so omega, it is going to be 0.2 omega BC, and what is k cross I? positive j. Positive j. So that represents VC. Let us say that this is our equation number 1. Clear यहाँ तक? Yes sir. Okay, moving further, now moving on to wheel D. अब एक छोटी सी मैं आपसे एग्जाम्पल बात करता हूँ, ऑल्दो आपको एग्जाम्पल 16-8 नजर आ रही होगी, लेकिन इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा खाली जगह के ऊपर एक अदद व्हील बनाता हूँ जो कि व्हील डी है अगली एग्जाम्पल का, और उसको मैं सेंटर से ग्राउंड कर देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ ये मेरे पास पॉइंट है विच इज पॉइंट सी। अब व्हाट शुड बी द वेलोसिटीज, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी? सबसे पहले मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी? टेंजेंट टू द सर्कल? यस सर। So in this case point C is just beneath the ground point, so आपका जो radius of rotation है वो आपका ये वाली straight line है। So what should be the direction of this C? Along the horizontal axis. अब इसमें अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, व्हील किस तरह रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हैं?
Counterclockwise. Wheel would be rotating in a counterclockwise direction. So accordingly, if the wheel is rotating in a counterclockwise direction, this is going to be the direction of VC. ऐसा ही है? Yes, sir. So आपको magnitude तो नहीं पता, but you can write VC to be equal to VCI, isn't it? Yes, sir. Okay, so in this equation, we can write VC to be equal to VCI. क्या मैं लिख सकता हूँ VC vector को as VCI? Okay, now you compare the coefficients on both sides of this equation, comparing the I and J coefficient. So once you are comparing the I coefficients, it is going to be VC to be equal to 5.196. And when you compare the J coefficients, it would be 0 equal to -3 plus 0.2 omega BC. So from this, you can get the value of VC to be equal to 5.196 and the value of omega BC to be equal to 15 radians per second. And since it comes out to be a positive quantity, it means that your assumption regarding the direction of omega BC was correct. That is, this link BC is basically rotating in a counterclockwise direction. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, now how you are going to find out? हमें कहा गया था we need to find out the angular velocities of link BC जो कि हमने determine कर ली, and the wheel. So how you are going to determine the angular velocity of the wheel? V equal to R omega and omega equal to V by R. So V to given है, R given है. और अगर आप स्केलर यूज करना चाहें तो स्केलर भी कर सकते हैं, but however if you want to use the vector form, then for this wheel D we can write VC equal to omega cross R, where omega is the angular velocity of the wheel and R is basically the vector which defines the position of C with respect to D. So VC already आपने पिछली केस में निकाली है, which is 5.196 I. Omega अभी हमने जिस तरह बात की, if this link is going in this way, the omega is going to be in this direction, which is basically omega dk. So writing it as omega dk, and position vector is going to be 0.1 j, but with a negative sign. So when you solve it, omega d comes out to be 51.96. So आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो स्केलर कर लें, आप सिंपल स्केलर से v इज इक्वल टू ओमेगा r कर लें, इससे आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी. आप चाहें तो ये वेक्टर फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Yes, Okay. So we have solved 3 examples. One जिसमें 2 ट्रांसलेशन, एक जनरल प्लेन था. सेकंड एग्जांपल में एक जनरल प्लेन, एक रोटेशन, एक ट्रांसलेशन थी, और थर्ड में 2 रोटेशन और एक जनरल प्लेन मोशन था. आई होप कि ऑल दीज 3 एग्जांपल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. ओके, अब हम करेंगे क्या कि अगली प्रॉब्लम एक्सरसाइज की हम एक दफा देखते हैं, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके मोशन को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद इन द रिमेनिंग टाइम ऑफ टुडेज लेक्चर. सो वी नीड और वी आर गोइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ मोशन दीज लिंक्स आर अंडरगोइंग, और उसके बाद हम कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो इसका कल की क्लास में जो है वो देखेंगे. ओके, सबसे पहली बात तो ये कि इफ वी टेक अ लुक एट दिस फिगर, हाउ मेनी मूविंग रिजिड बॉडीज यू कैन आइडेंटिफाई? five. So there are a total of 5 rigid bodies which you can see here moving. Now let us first of all identify those rigid bodies. 4 of them are going to be these rigid links AB, DD, CD and DE, whereas the 5th rigid body is going to be the piston, which is constrained to move within the slot, horizontal slot as shown to you in the figure. So हमारे पास ये 5 rigid links आ गए हैं. अब एक एक करके हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह का मोशन ये रिजिड लिंक्स कर रहे हैं. Starting with piston E, what type of motion this piston E is undergoing? Horizontal motion. So it is basically undergoing translatory motion along the horizontal axis. ठीक है? Okay. Yes. Now link AB is being grounded from point A. So what type of motion this link AB is undergoing? Pure rotation about point A. Rotational motion about point A. Okay, what about link CD? What type of motion link CD is undergoing? C पे grounded है तो ये भी pure rotation. So About point. it is being grounded from point C. So again, it is undergoing pure rotational motion about point C. So अभी हमने एक E को identify किया जो translation में थी. AB और CD जो है वो rotational motion कर रहे हैं. Okay, what about the type of motion which link BD is undergoing? General plane.
जनरल प्लेन मोशन हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया? अगर हम ए बी का मोशन ट्रेस करें तो इट इज रोटेशनल मोशन अबाउट दिस डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन हर एक को नजर आ रही है जो मैंने पॉइंट बी पे ड्रॉ की है। Yes, sir. इसी तरह लिंक सी डी जो है इट इज आल्सो अंडरगोइंग रोटेशनल मोशन। सो आपको ये येलो कलर की डॉटेड लाइन नजर आ रही है जो मैंने डी के ऊपर ड्रॉ की है। Yes, sir. ओके, सो एट द नेक्स्ट इंस्टेंट अभी हमें गिवन क्या है कि ए बी जो है इट इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन विच इज बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एट द नेक्स्ट इंस्टेंट प्रोबेबली पॉइंट बी, अगर मैं एग्जेजरेट करके बनाऊं, पॉइंट बी वुड बी एट दिस पॉइंट जो मैंने ब्लैक कलर के क्रॉस से शो किया है, Yes, sir. एंड पॉइंट डी वुड बी एट दिस पॉइंट जो कि मैं येलो के ऊपर वो ब्लैक कलर का क्रॉस शो कर रहा हूं। इट मींस दैट एट द नेक्स्ट इंस्टेंट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ लिंक बी डी। सो इसमें कौन सा मोशन हुआ है बीडी में? General plane motion. इसमें जनरल प्लेन मोशन हुआ है, यानी ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन दोनों इसमें हो रही है साइमल्टेनियसली। सो दिस लिंक बीडी इज बेसिकली अंडरगोइंग जनरल प्लेन मोशन। ओके, कैन यू जज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बीडी? Yes, sir. क्या डायरेक्शन है? It's around the positive. Counterclockwise. Counter clockwise direction. So this is going to be the direction of omega BD, which is in a counter clockwise direction. ठीक है, अगर जज नहीं भी कर सकते तो हम अपनी एनालिसिस में इसको काउंटर क्लॉकवाइज अज्यूम कर सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट द मोशन व्हिच लिंक डी इज अंडरगोइंग, डीई? General plane. इट इज General अगेन plane. इट इज अगेन इन जनरल प्लेन मोशन। उसकी वजह क्या है कि नेक्स्ट इंस्टेंट पे मैंने डी को तो शो कर दिया था जो कि ब्लैक लाइन से यहाँ शो हो रहा है। अगर ये लिंक यहाँ आ रहा होगा तो प्रोबेबली ये इस लिंक की जो है वो पोजीशन होगी। पिस्टन ने हो सकता है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव कर गया होगा। अच्छा, एक और बात बताएं, इज देयर एनी वे दैट दिस पिस्टन कैन मूव टुवर्ड्स द राइट? Yes, sir. कर सकते हैं. Yes, sir. Sir, अगर CD उस पे नहीं, clockwise लेकिन rotate. सीडी का मोशन अभी हमने जज किया है, CD is rotating in this direction because AB is rotating counterclockwise, so accordingly CD would also be rotating in a counterclockwise direction, isn't it? Yes, sir. So if Yes, CD is rotating in a counterclockwise direction, is there any possibility of piston E going towards the right? No, sir. No, sir. No, so piston E has to move towards the left. So what type of omega this DE would undergo, clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. So omega Counterclockwise. DE is also going to be in a counterclockwise direction. ठीक है? So अगर हम इन पांचों लिंक्स को देखें, हमारे पास जो 5 लिंक्स थे, one is in translation which is piston E, 2 of them are in rotation which is link AB and CD, whereas the remaining 2 links which is link BD and DE, they are in general plane motion. So accordingly we are going to apply the relative velocity equation on link BE and BD and DE. Is this point clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो अभी हम इसकी बाकी एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज वी वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट 5 और 6 मिनट्स। तो वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। हम इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे इन टुमारोज क्लास, और कल ही फिर हम एक्सेलरेशन वाली एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। प्लस कल आपको आई होप के याद है कल क्विज नंबर 8 होना है। टॉपिक क्या है क्विज नंबर 8 का? कैन यू Central impact and oblique impact. जी, तो आप उम्मीद है सेंट्रल और ऑब्लिक इम्पैक्ट की तैयारी हर एक की होगी। अगर वीकेंड में नहीं भी की तो आज का दिन लगा दें, थोड़ा सा उसके प्रॉब्लम्स को गौर से देखें। सबसे पहले तो किस तरह आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, सेंट्रल इम्पैक्ट है या ऑब्लिक इम्पैक्ट है, और फिर अकॉर्डिंगली अगर सेंट्रल है तो उसका प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएशन क्या होता है, और अगर ऑब्लिक है तो उस पर आप कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, उसके हवाले से थोड़ी सी जो है वो तैयारी कर लें इंशाल्लाह। कल हम ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज लेक्चर।